तो अच्छा I've got NH4 NO3 तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालो तो percentage is calculated कि there are 2 nitrogens so that's 14 times 2 so it's the mass of nitrogen divided by the total mass of the substance which is divided by the total mass which would be N is 14 times 4 hydrogens plus there's another N plus 16 times 3 and we're trying to find the percentage of nitrogen so into 100 so that is how you find the percentage so what percentage do we get for this क्या आ रही है इसकी value I mean it's going to be 28 divided by what 14 times 4 that's what 56 14 times 4 is 56 I think Sir, it's 31.81. so 31.8%. ठीक है 3 significant figures. What about this one? NH4 twice SO4. इसकी भी calculate कर लेते हैं कि how much N it's got? It's got I think 2N क्योंकि NH4 twice है. So if you try to find the percentage of nitrogen in this case, it would be 28, 14 times 2. So NH4 twice है, so 14 plus 4, that's NH4. That is twice. Plus there's 1 sulfur, that's 32, plus oxygen, 4 oxygen, so that's 16 times 4. Or percentage so into 100. What do we get for this? $21.2. Okay, this is going to be 21.2%. So percentage wale question that they are kind of very straightforward and very simple, ठीक है? और दूसरा percentage के साथ ना जो question आता है that is about empirical formula. So बल्कि let me open another worksheet for empirical formulas. एक second, just a second. Moles. ये वाला है. ऐसे मैंने पोस्ट भी किया उसके अंदर ग्रुप के अंदर एज एन असाइनमेंट सो डू कंप्लीट इट So I'm going to do just empirical formula questions and this one. एक सेकंड में शो करता हूँ. इधर आगे था शायद. Just a second. This one. हम लोग स्नैपशॉट ले लो. अच्छा now ठीक है. अच्छा now what we're going to do is we're going to do or attempt empirical formula questions. ठीक है मैं बता देता हूँ कि किस तरह होता है कि whenever you have a formula, ठीक है, so I'm just going to first tell you कि whenever you have a formula, तो for example I have C6H12O6. So the formula has 3 elements and all 3 elements they have a certain percentage of it by mass. For example, if I want to find the percentage of carbon, तो carbon की percentage क्या होगी? There's 6 carbon, so that's 6 times 12 divided by the total, which in this case is 6 times 12 is 72. 72 plus 12 that's 84. और फिर 16 times 6 उसमें add करो तो total 180 बनता है. Into 100 करो. Can anyone tell me what is the percentage in this case that we are getting? Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum. What's the percentage of carbon? That's
It's 40%. ठीक है, so that is 40% by mass. Hydrogen की निकालो तो hydrogen की percentage क्या होगी? That would be hydrogen is 1, so there's just 12 of them over 180. That's the total mass, MR of the compound into 100. What do you get for this? 6.66. 6.67 होगा क्योंकि if you round it off. And finally, you have oxygen. So there's 16 oxygens, sorry, 6 oxygens. So 16 is the AR of oxygen. 16 times 6 is, I think it's 96 over 180. Or उसको into 100 करोगे. What do you get for this? 53.3. So you get 53.3%. Anyway, so the thing is कि every element, I mean, the formula, the compound has a certain percentage of every substance. For example, it's got 6 carbons, 12 hydrogen, and 6 oxygen. So the total mass of the compound, the MR of the compound, according to the pure table, is 180. So इसकी जो mass है ना, उसमें contribution होगी सारों की. 40% of this is carbon, 6.67% of this is hydrogen, and 53.3% by mass is oxygen. Now, what if you're given the reverse and you have to find the formula, ठीक है, and that gives you the empirical formula. For example, ये वाला question कर लेते हैं कि now उसने different elements की composition दी हुई है, but we don't know what the original formula is. So for example, in this case, अगर हम इसको यहाँ पे करें, this carbon, there is hydrogen and there is oxygen in the formula, ठीक है. Now we're going to try and do the reverse. तो उसने कहा कि organic acid it contains 0.606 grams of carbon, और फिर उसके अंदर ना there is 0.01 grams of hydrogen, 0.16 grams of oxygen. तो इसकी mass जो है ना, that is 0.01 grams, और इसकी mass जो है, that is 0.17 grams. Now you can do the reverse, you can find the formula, and the way you find the formula is, the first thing is you find the moles. Moles क्या होते हैं? Mass divided by AR. So you will know how many moles of carbon atom, hydrogen atoms, and oxygen atoms are present in the formula and their ratio. So इसके moles निकाल लो. इसके moles would be found out. It's going to be 0.06 divided by 12. This would be 0.01. इसकी जो AR है, that's 1. And this is going to be 0.16 divided by 16. So the values that we're going to get is, इसकी बता दो कि क्या value आ रही है for this one. 5 multiplied by 10 power minus 3. So that comes out to be 0.005 moles, I think. Second one is obviously 0.01 moles. And the third one is what? 0.01 moles. Yes. So you got these values. The empirical formula ना पहला काम है कि the first step number 1, whenever you find empirical formulas, ठीक है, step number 1 is divide by the AR, ताकि उससे moles पता लग जाए, ठीक है, कि इस कितने moles है, इस कितने atoms है, इस कितने atoms है. The second step is every formula is a whole number ratio. It's not a ratio in decimals, it's a whole number ratio. So how do you convert this into whole numbers? Okay, we got this ratio, but it's not a whole number ratio. The way you can find a whole number ratio is once you have the moles, so step number 2 is you divide by the smallest. I mean, just as an example, अगर ratio 2.5 ratio 5 आ रहा है, so what's the whole number ratio? So this is basically 1:2. What you do is you divide by the smallest. दोनों को ना 2.5 से divide कर दो. If you do that, you're going to get 1:2, ठीक है? So whenever you have any decimals, anything in decimals, and you have the ratio, you can convert that into a whole number ratio. तो यहाँ पे ना जो smallest है ना, that's 0.005. इसका मतलब divide everything by 0.005. The first one would be divided by 0.005. The second one would also be divided by 0.005, and the third one would also be divided by 0.005. इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी आई थिंक क्या आएगी 2, और इसकी भी 2 आएगी. तो इसका मतलब है the whole number ratio is कि there is
one carbon and there are two hydrogens, and in the formula there are two oxygens. Okay, that's how you find the whole number ratio. तो पहला काम ये करना है कि जब भी उसने एटम्स की मास दी हुई है या उनकी परसेंटेज मास दी हुई है, ठीक है, इट वर्क्स फॉर बोथ, तो उन एटम्स के मोल्स निकालो कि आपके पास इतने मोल्स इस एटम के, इतने मोल्स फॉर्मूले में इस एटम के, एंड और इतने मोल्स इस एटम के. और सेकंड पार्ट है, वंस यू हैव द रेशियो इन मोल्स यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ होल नंबर रेशियो, व्हिच इज कि तीनों में से ना जो सबसे छोटी वैल्यू है, द स्मॉलेस्ट वन, you pick that and divide everyone by that one. So for example, out of the 3.005 is the smallest, divide everything by 0.005, automatically your numbers are going to get converted into whole numbers. So the formula is C1, H2 and O2. Yani formula ke andar the ratio of the atoms is okay, there's going to be one carbon, there's going to be two hydrogens and there's going to be two oxygens as well. Ye clear hai सारों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाकी Hamza, is this clear? Wasna, is this clear? Yes, sir. अच्छा, तो ये let's do the other one कि इसमें वो कह रहा है कि there's a compound and it was analyzed, it contained carbon, hydrogen and oxygen as well. We'll say show that the empirical formula is CH3O. And also remember, empirical formula is the simplest whole number ratio. Okay, what is the simplest ratio of the atoms in the molecule? So I'm going to do part C now. So I've got carbon, which is 0.72 grams, and I've got hydrogen, which is 0.18 grams, and I've got oxygen, which is 0.96 grams, I think. Yes. First step, divide by the AR, find the moles. Divide this by 12, divide this by 1, divide this by 16. So if I do that, I'm going to get values. For the first one, I think it's going to be what? 0.06? 0.06. Second one is 0.18. Obviously, this would be 0.06 as well, right? So तीनों की quantity आ गई. Can you confirm if this is 0.06? Yes, sir. The अगला part है कि you're getting the mole ratio of the atoms in decimals. What's the whole number ratio? So divide by the smallest. Pick the smallest, which in this case is 0.06. Divide everything by 0.06. So this would come out to be 1. This would come out to be 3. And this one would come out to be 1. So ratio we burn, it's 1 carbon, 3 hydrogens, and 1 oxygen. So you're getting this empirical formula C1, H3, and O is 1. Is this clear? So 1 clear? What's that? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So एक और कर लेते हैं कि potassium, iron और कोई compound है, carbon and nitrogen. So सारों को लाइन में रखो. Potassium. तो potassium हो गया. Iron, Fe. You've got carbon and you've got nitrogen. So potassium is 0.547 grams. उसको divide by उसकी जो AR है ना, that is what's the G? Sir, will you take online class today? Extra online class today? ठीक है, आज करते हैं. ठीक है. जी sir. अच्छा, 0.547 divided by 39. वो उसकी AR है. Iron जो है ना, that is 0.195. मैं उसको पहले डिवाइड कर रहा हूँ. That's 56 होती है उसकी periodic table में. Then you've got carbon, which is 0.252 grams उसकी mass दी हुई है. तो उसको divide by 12. और nitrogen दिया हुआ है 0.294, उसको divide by 14. कोई मुझे सारों की वैल्यूज बता दे क्या क्या आ रही है. First one क्या है? Sir, it is 0.0140. This is 0.0140. Second one की क्या है ये? 0.195 divided by 56.
3.48. नहीं इतनी बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती 0.195 नहीं 0.195 डिवाइड बाय क्या था 56.00348 so that one is 0.00300 Sir, the next is 0.021. the next one is 0.021 what about the last one what do you get for the last It's the same. Sir, it's also 0.021. बस ठीक है and then these are not whole number ratios you have the moles but they are decimals so which one is the smallest I think the first one is the smallest divide everyone by everything by the first one Sir, isn't the second one the smallest? yes the second one is the smallest yes ठीक है it's got 2 zeros divide everything by 0.00348 So what do we get for each one of them? Sir, हाँ जी 0.014 smallest नहीं है? नहीं इसमें 2 zeros आ रहे हैं डेसिमल के बाद 0.00 है ये Oh, okay, okay. तो वो तो उससे भी छोटी होगी है अच्छा क्या था 0.0140 Divide- Actually, sir, it's 1.02. so it's coming नहीं my value is around 4 Gee, sir, I said 4.02. अच्छा ठीक है so that's 4.02 what about the next one that's obviously 1 what about this one Sir, I got 6.03. so that's 6.03 and the last one would also be 6.03 so if your values are very close to 4 or 6 I mean that this is approximately 6 I mean 6.0 4.0 something so you can call this as 4 I mean you can round it off I mean you can only round it off if the value is really like really close to 6 I mean this is 6.0 anyways so that's the ratio it's going to be K4 and Fe would be 1 and you will have carbon that would be 6 and nitrogens would be 6 in the formula as well so that's and I'm just going to copy this in the notes as well so remember that when you're doing empirical formulas make sure just 1 second so empirical formulas requires just 2 steps and that is so the only thing that would be provided to you would probably be the percentage mass or the mass I mean this would be given to you so to calculate the empirical formulas you would need to do 2 things number 1 that is divide mass or percentage mass it doesn't really matter if it's percentage mass by the AR okay that's the first one and second is to find the simplest ratio
the second step is divide by the smallest value. And in most cases, it will come out to be a whole number ratio. And a few things about empirical formulas. Remember, empirical formulas, what information does the empirical formula tell you? It gives you the simplest ratio of the atoms in a molecule. So simplest ratio of atoms in a molecule. So for example, तो इससे ना आपको actual formula नहीं आएगा. For example, if glucose is C6H12O6, मतलब empirical formula वाला तरीका करोगे ना तो उससे what you'll get is the simplest ratio C1, H2 and O1. You wouldn't get the original formula. ठीक है? This is the empirical formula is this one. You're going to get this ratio. कि आपको ये पता लग जाएगा कि ग्लूकोज के अंदर ना रेशो ये है. Sir, can you scroll up? ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि रेशो ये है. What you wouldn't know is कि एक्चुअल क्या है. अच्छा, एक्चुअल फाइंड आउट करने के लिए ना one extra information would be needed, and that is कि अगर आपको empirical formula पता लग गया ना, उस तरह का भी क्वेश्चन कर लेते हैं. How to find molecular formula. ठीक है, molecular formula वो होता है जिसके अंदर actual number of atoms होते हैं. अभी आपको सिर्फ रेशो पता लगा है. ठीक है, this is your empirical. So how to find the molecular formula? For that, you would need one more information is required, and that is the MR is required. Okay, MR of the molecule is needed. तब जाके ना you'll be able to find out. For example, glucose के केस में आपने figure out कर लिया कि जी empirical formula C1H12, not H12, C1H2O1. That's your empirical formula. ठीक है, you did all the calculations जिस तरह हम कर रहे थे, and you figure out कि भाई ये इसका ना empirical formula. Empirical formula की अगर mass निकालो ना, that's coming out to be 30. But the ratio, that's the simplest ratio. Or 1 carbon, 2 hydrogens, 1 oxygen. If you add them up, that comes out to be 30. और उन्होंने कहा है कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि अभी हमें नहीं पता, ठीक है, लेट्स अज्यूम हमें नहीं पता, उसकी एमआर दे दी उन्होंने. दी एमआर इज 180. तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला इज 30 एंड द एमआर इज 180, दैट मींस कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो 6 टाइम्स ज्यादा है. क्योंकि only then is that possible कि इसकी जो molecular mass है ना, empirical formula की जो mass है, actual formula की mass is 6 times greater. It's 180. So that means उसमें जो number of atoms की जो quantity होगी, that would be 6 times greater. It would be the same ratio, except that it would be 6 times greater. So it would be C6H12 and O6. तो अगर आपको MR पता है ना, then you can find the molecular formula by looking at the empirical formula. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर empirical formula में atoms की जो mass है वो ये आ रही है और molecular formula में atoms की mass ये है, तो रेशियो तो इनका वही होगा. How many times greater would be the atoms? क्या आपके पास ये आ जाए? एक क्वेश्चन इस तरह का हम कर लेते हैं जिसके अंदर ना उसने ये कहा हुआ हो. Just 1 second. Where the MR is given. ठीक है, 1 second. सर आप इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में, प्लीज सर. ठीक है, अच्छा ये वाला कर लेते हैं. Over here उससे कहा कि there's an ester something और उससे कहा 116 है उसकी. The molecular mass is given. That is 116.
तो पहले तो आप ना इस एस्टर की ना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे क्या है, ठीक है, इधर ही हम वर्किंग कर लेते हैं. 0.18 grams carbon है, so what would be 0.18 grams divided by 12. ठीक है, हाइड्रोजन जो है ना that is 0.03 grams, that would be divided by 1, and oxygen is also 0.08 grams, so that would be 0.08 divided by 16. पहले वाली की वैल्यू बता दो क्या आ रही है हमारे पास. 0.015. So you're getting 0.015, and this one is 0.03 obviously, and the last one is what, 0.005. G, sir. So we're getting 0.005 for that. Simplest ratio, divide by the smallest, okay? So divide everything by 0.005. What's the value of the first one? 3? And this is 6. Can anyone confirm this? It's sorry, your last one is 1. इसका मतलब है the empirical formula or the simplest ratio is C3H6 and 1. नहीं, 1 के H is 1. नहीं, sorry, O is 1. अच्छा, ये आपके पास है, you're getting the empirical formula. और साथ ही उससे कहा हुआ है यहाँ पे नीचे बॉटम पे he's saying कि इसकी जो mass है ना that's coming out to be 116 molecular formula की. This is the empirical. पहले तो empirical की mass निकाल लेते हैं. इसकी mass क्या होगी? That's 3 carbons, that's 12 times 3, 36 plus 16, that's what do you get, 58? Uh, 36 plus 16 plus 6 hydrogens, that's 1 each. So 36 plus 22, that would be 58. तो molecular formula का उसने बताया है कि जो actual formula है ना उसकी जो MR है that's 116. So that indicates कि 58 और 116 में कितना difference है. That means कि the number of atoms are actually double the amount. But it's the same ratio but double the amount. So the actual formula would be C 6, H would be 12, and O would be 2. ये clear है? Yes, sir. Yes, sir. So बस ये empirical formula में और कुछ नहीं है, बस ये 2 steps, divide by R, divide by the smallest. और molecular formula तक पहुंचने के लिए you would need the MR of the molecular formula. उसमें फिर figure out करना पड़ेगा कि भाई ratio तो यही होगा, ये simplest ratio है, तो actual formula में कितने atoms होंगे, तो उसका factor लगा लेना कि empirical formula is this one, तो उसके factor से you can figure out the other one. Just a second के बस other questions आसान होंगे. अच्छा, sometimes what would happen is कि like questions like these, sometimes what's going to happen is कि when you're calculating empirical formula, you will not get the right ratio, a whole number ratio. For example, इसका कर लेते हैं, इसमें भी वही हैं 3 चीजें. Subhan, yes. Sir, if we're only doing questions, so can I go? I have to go अभी. ठीक है. और अगर कुछ और करना है तो बता दें. नहीं, इसमें तो वही करना है, empirical formula ही कर रहे हैं, ठीक है. चलिए सही, okay, Allah Hafiz. Okay. So this one, carbon, hydrogen, oxygen, ठीक है. अब इसमें क्या, you've got 10.5 grams of carbon, you've got 0.75 grams of hydrogen, and you've got 10 grams of oxygen. इसका कोई जल्दी से बता दे क्या होगा. Okay, what do we get for these? The first one. 0.875. ठीक है, ये 0.875 आ गया. ये second क्या होगा? That's 0.75 obviously. What is the third one? 0.625.
अच्छा फिर डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट आई थिंक व्हिच इज 0.625. तो ये तो 1 आ गया. इसकी क्या वैल्यू आ रही है फर्स्ट वन की? It's 1.4. That's coming out to be 1.4. This is coming out to be what? The second one. 1.2. और लास्ट वाला 1 है. अच्छा प्रॉब्लम है कि ये सब करने के बाद भी ना you're not getting whole numbers. ठीक है. So what you can do is you can convert this ratio into whole numbers yourself. कि सारों को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? 14, 12 और 10 का रेशो बन जाएगा. उसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि द रेशो हैज टू बी द सिंपलेस्ट रेशो. तो आई थिंक सारों को डिवाइड कर दो 2 से तो इसका 7 बन जाएगा, इसका 6 बन जाएगा और इसका 5 बन जाएगा. सो you're getting 7, 6 and 5. So sometimes what would happen is कि वो रेशो फिर भी ना एंड में सिंपलेस्ट रेशो होल नंबर रेशो नहीं आ रहा. इट्स मतलब वो सब करने के बाद भी ना you're not getting a whole number ratio. तो फिर वो एंड में ना आप खुद ही कन्वर्ट कर लो कि होल नंबर में क्या होगा कि उसके डेसिमल्स खत्म करने 10 से मल्टीप्लाई कर दो 14, 12 और 10 आ जाएगा और फिर उसको फर्दर मैनुअली सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है. तो ये कभी कभार करना पड़ता है. चलिए ये सारा एम्पिरिकल फॉर्मूला का हो गया. एक और जो इम्पोर्टेंट चीज करनी थी वो ये थी कि कहाँ गया हमारा? अच्छा वो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था कि दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एन एक्सेस. अच्छा लिमिटिंग एक्सेस. So there's a limiting reagent and there's a reagent which is in excess. अब इसमें ये कि रिमेंबर सब कुछ मोल्स में हो रहा है कि आप काउंटिंग मोल्स में कर रहे हो. तो I have a reaction in which I have NaOH reacting with HCl and they produce NaCl and H2O. ठीक है. Your equation deals in moles. अब इक्वेशन सजेस्ट ये करिए कि सारे 1:1 रेशो में रिएक्ट करें सेम क्वांटिटी. NaOH और HCl सेम क्वांटिटी रिएक्ट करेगी एंड द सेम अमाउंट ऑफ HCl and H2O would be produced. तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 50 NaOH के मॉलिक्यूल हैं एंड आई एम एडिंग 70 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl तो क्या गलत किया मैंने? आई मीन द रेशियो इज 1:1. कौन सी चीज मैंने ज्यादा डाल दी है रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा? HCl. तो HCl ऑब्वियसली मैंने ज्यादा डाल दिया तो इसका मतलब 70 तो चाहिए नहीं था. 50 would react with only 50 is needed, right? सर सेम रेशियो होना चाहिए फिर. हाँ क्योंकि वो इक्वेशन ये कह रही है कि एक NaOH एक के साथ रिएक्ट करेगा ना. ठीक है. तो 50 जी सर. 50 होंगे तो वो 50 के साथ रिएक्ट करेंगे. दे विल नॉट रिएक्ट विद 50 विद 70. ठीक है. तो इसका मतलब है 20 आर इन एक्सेस. कह रहे एक्सेस का मतलब समझ आ गया कि क्या एक्सेस है? तो एक्सेस excess reagent is the one that's remains unused at the end of the reaction more than the required amount. यानी इसके 20 जो है ना वो एंड में बचे हुए पड़े होंगे. ठीक है. more than the required amount. ठीक है. दूसरा जो है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेड है. तो this one is the one that's in excess और जो दूसरा है ना that's your limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है कि ये कम डाला था ना इसी की वजह से वो यही रिएक्शन को लिमिट कर रहा है. क्योंकि अगर ज्यादा होते अगर 60 होते तो वो भी 60 रिएक्ट कर जाता. अगर 70 होते तो वो भी 70 रिएक्ट कर जाते. ये कम था इसकी वजह से वो पूरा रिएक्ट नहीं कर सका. तो जो कम डाला होता ना दैट्स नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है. कि ये खत्म हो गया था इसलिए रिएक्शन ना उसके बच गए. वरना अगर 70 होते ये तो
रिएक्शन हो सकता था। अच्छा यहाँ पे ये बड़ा सिंपल है, बट इफ यू हैव डिफरेंट रेशियोज, कि इफ आई हैव अच्छा if I have a different ratio, okay, I have 2 NaOH reacting with H2SO4, remember ratio जो है ना वो 2:1 हो गया। और अब ना मैं ले रहा हूँ 50 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स हैं और मेरे पास ना 80 NaOH के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे बताओ कौन सा एक्सेस में है, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा कौन सा डाल दिया? NaOH. ठीक है। अच्छा फर्स्ट थिंग, कोई और वसा, कैन यू आंसर दिस? सनीम, बाकी ज़ैनब, which one is in excess? अच्छा now NaOH 2 NaOH. Is H2SO4 in excess? ठीक है, Because the ratio is different. exactly. अच्छा the point is कि excess में वो है that is going to be left unused at the end of the reaction, ठीक है? Now the ratio in which they're reacting is 2:1. So what that means is कि remember don't look at कि ये ज्यादा है तो ये excess में है, ठीक है? That's not how it works. कि according to the ratio 2:1, 80 will react with 80 divided by 2 into 1 करो तो 80 needs to react with, मतलब 80 will react with 40 क्योंकि it's 2:1. तो इसका मतलब है you don't need 50. 50 is a lot more than the required amount. क्योंकि आपको तो खाली चाहिए 40, मतलब 80 completely react होगा, and according to the ratio 2:1, 80 will react with 40, ठीक है? तो why are you adding 50? I mean वो तो आपने ज्यादा ऐड कर दिया, you just need 40. ये बात समझ आइए सारों को? जी सर। अच्छा तो अब मसला ये है कि जब रेशियोज डिफरेंट होता है ना तो इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट व्हिच वन इज इन एक्सेस। तो उसका बस एक छोटा सा शॉर्टकट होता है व्हिच इज कि अगर रेशियो अजीब सा हुआ ना कि 6 NaOH है प्लस 3 Cl2l let's say and 5 NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. Anyways, let's say this is the ratio. अच्छा इसके मैंने डाले 0.85 मोल्स। अच्छा रिमेंबर हम तो मोल्स में काउंट कर रहे हैं, ठीक है? इसके मैंने डाले 0.5 मोल्स। एक तो पहली बात है कि एक्सेस वाला नंबर कभी भी आप यूज नहीं करते कैलकुलेशंस में, क्योंकि दैट इज द रॉन्ग नंबर, क्योंकि आपके रिएक्शन में 80 विल रिएक्ट विद 40 नॉट विद 50, ठीक है? 40 इज द राइट नंबर, 50 इज द रॉन्ग नंबर। जो भी एक्सेस में होगा ना उसके नंबर को बाहर निकाल दो, उसको आपने यूज नहीं करना, ठीक है? यानी अगर मैंने इसके मोल्स निकालने हैं ना तो आई विल नॉट बी यूजिंग दिस रेशियो, 50 विल नॉट बी यूज्ड एनीवेयर। तो एक्सेस, एनीथिंग दैट्स इन एक्सेस उसके मोल्स को आपने यूज ही नहीं करना क्योंकि वो गलत है, ठीक है? क्योंकि असल में तो सिर्फ 40 याद करें नॉट 50। तो इधर मैंने 2 मोल्स दे दिए, आई नीड टू फिगर आउट व्हिच वन इज इन एक्सेस। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि विदाउट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, इसके मोल्स को 0.5 को डिवाइड बाय इट्स रेशियो जो कि 3 है, और इसका मोल्स 0.85 है, डिवाइड इट बाय इट्स रेशियो जो कि 6 है, और दोनों के नंबर को देखो कौन सा बड़ा आ रहा है। तो इनमें से देखोगे which one is the bigger number, like if I do 0.85 divided by 6 so I get 0.14, let's say 0.14, and if I do 0.5 divided by 3, so if I do 0.5 divided by 3 वो 0.16 आ रहा था, 1.14 आ रहा है, 1.16, ये बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब है दिस इज द वन दैट्स इन एक्सेस,
मतलब इन कैलकुलेशन को बीच में कहीं पे भी लिखना नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा अभी कौन सा एक्सेस में। इसके मोल्स को 3 से डिवाइड कर दो, इसके मोल्स को 6 से डिवाइड कर दो, जो भी उनका रेशियो है, और जो भी वैल्यू बड़ी आएगी ना, दिस वन इज द लार्जर वैल्यू, तो दैट इज द वन दैट्स इन एक्सेस, वो मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है, ठीक है। और वो फिर रेशियो भी लगा लो, 0.85 डिवाइड बाय 6 into 3 करोगे तो यू विल गेट 0.425 आई थिंक मोल्स। तो इसका मतलब है इसको रिएक्ट करने के लिए जस्ट नीडेड 0.425 मोल्स, नॉट 0.5, तो वो ऑब्वियसली एक्सेस में था। तो यहाँ से ना विल कंटिन्यू, ठीक है, विल डू लिमिटिंग एक्सेस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। Yeah, sir. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir.